Hello and welcome back. So in the previous one we have discussed about types of bacteria like fungi, protozoa, then we have discussed about virus, and after that we have discussed the various things about the microorganisms, that how it is useful, how with the help of the bacteria we have learned whole the system of how to make curd, how to make bread, right? So now we are talking about medicinal uses of microorganisms. So when you fall ill or you visit to a doctor for certain disease or something else, doctor is going to prescribe you some kind of medicines, or either they are giving you some kind of injections. So that injections or medicines are basically the form of antibiotics. वो जो medicine आपको दे रहे हैं या फिर वो जो injections आपको दे रहे हैं, that is called antibiotics. वो antibiotics के ही होते हैं, right? So today we are talking about antibiotics. So first thing is that okay, we know that they are giving us the medicine which is antibiotics, but the thing is that what is antibiotics, right? So medicines that kill or stop growth of the disease causing microorganisms, that kind of medicines are called एंटीबायोटिक्स. मतलब ऐसी मेडिसिन जो बैक्टीरिया को किल करती है, उसके साथ फाइट करती है और उसके ग्रोथ को स्टॉप करती है, दैट काइंड ऑफ मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स. So now you have clear idea when you are falling ill, why doctor is giving you the antibiotics, right? Because the doctor want to control the growth of these microorganisms which is kind of causing diseases, right? So if they are going to kill the bacteria or if they are going to stop the growth of bacteria, then such kind of medicines are called antibiotics, right? So further we are going to know about antibiotics, that which is the first antibiotic or who discovered it, right? So microorganisms are used in the preparation of antibiotics. So the microorganisms are basically going to use in this antibiotics. The first antibiotic was penicillin, and that first antibiotic was discovered by Alexander Fleming in 1928. It was prepared from a fungus called Penicillium notatum, right? Note the thing that the first antibiotic was penicillin. It was discovered by Alexander Fleming and it was prepared by a fungus. It was prepared from a fungus that is called Penicillium notatum. So if your doctor is prescribing some kind of medicine, if you have noticed, there are certain kind of antibiotics or medicines which are going to repeat. The most famous antibiotics are, the examples of that antibiotics are streptomycin, tetracycline and erythromycin are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria, right? So what we have discussed here, that what is antibiotic. So if the medicine is going to kill the bacteria or stop the growth, that medicine is called antibiotic. Number 2, commonly we are using the microorganisms for the preparation of antibiotics. Then who discovered antibiotics? Alexander Fleming. And which antibiotic was the first? That was penicillin. Then it was prepared from a fungus, the fungus called Penicillium notatum. The commonly known antibiotics are streptomycin, tetracycline and erythromycin. Okay, so next thing we are discussing about the antibiotics are that the antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases. मतलब ये पूरी जो मैन्युफैक्चर होती है, जैसे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, दैट दे आर गोइंग टू गिव अ शेल्टर, देन दे आर गिविंग अ फूड, राइट? So that specific thing, it is here that antibiotics are manufactured by growing a specific microorganisms on a large scale, and then they are using this kind of antibiotics to cure a disease, right? Next thing is, antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to
check the microbial infection in animals. मतलब ये एंटीबायोटिक्स है वो जो एनिमल हस्बेंड्री में जो एनिमल्स होते हैं उनके खाने में मिक्स करके भी उनको जो डिसीज़ हुए या फिर इन्फेक्शन हुए उनको चेक कर रहे हैं, राइट. सो दे आर मिक्सिंग विद द फूड एंड देन दे आर चेकिंग द माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स. नेक्स्ट थिंग इज दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीजेस. मतलब कि कई सारे प्लांट डिसीज को कंट्रोल करने के लिए भी दे आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देन they are using antibiotics. So discussing all about antibiotics, first we have discussed that what are antibiotics, right? The medicines which are going to stop the growth or which are going to kill the microorganisms, that are called antibiotics. Next thing is, which was the first antibiotic and who discovered it? So penicillin was the first antibiotic and Alexander Fleming discovered in 1928, right? Then which microorganism are there in that particular antibiotic? So fungus called Penicillium notatum was present in that antibiotic. Next thing we have discussed that how it is going to manufacture, how they are going to grow, right? So antibiotics are manufactured by growing specific microorganism and then they are using it for the purpose of antibiotic or to cure the disease. Next thing is that antibiotics are even mixed in the food of certain animals to check the microbial infection. मतलब उनके खाने में मिक्स करके भी वो उनको मेडिसिन दे पाते हैं और जो एनिमल में इन्फेक्शंस हो रहे हैं उसको चेक कर पाते हैं. The next is that we have discussed that plant also have the disease, certain kind of diseases, and people are going to use the antibiotics to control that plant diseases. So these things we have discussed about the antibiotics. Fine. So now we are talking about the another medicinal use of microorganism. First we have done about the antibiotics. So now we are discussing about vaccine, right? So today when a disease carrying microbes enter our body, what happens, how it, first we are discussing that how the vaccine is going to work, right? So when a disease carrying microbes enter our body, मतलब कि जो microorganism है, जो disease causing microorganism है, जब हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द डिसीज. सो आपकी बॉडी या फिर हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस कर रही है? एंटीबॉडीज. सो दे आर नेचुरली प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज टू फाइट द डिसीज, राइट? द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स. जैसे कि एक बार अगर किसी जगह पे गिरते और जोर की चोट आई है तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखोगे ना कि उस जगह से ना जाओ या फिर उस वहीं से दूर चलो. सो योर बॉडी इज़ गोइंग टू रिमेंबर दैट कि वहाँ पे गिरे थे और ज़्यादा खून लगा था तो फिर यहाँ से संभल के चले. वैसे ये एंटीबॉडीज़ भी है जो फाइट कर रहे हैं, वो याद रखते हैं. द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स, मतलब वो याद रखते हैं कि अगर ये वाला माइक्रोब फिर से आ गया तो उसके साथ फाइट कैसे करेंगे. सो इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इन अ हेल्थी बॉडी. सो मतलब अब आता है कि वैक्सीन क्या है. सो व्हाट इज़ वैक्सीन. तो अब जब वो फाइट याद रखते हैं ना, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, दैट डेड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमारी हेल्दी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. मतलब कि एज अ फॉर्म ऑफ वैक्सीन डेड और वीकेंड माइक्रोब्स हैं उनको हेल्दी बॉडी में एंटर करते हैं. तो अब क्या होगा, द बॉडी फाइट अगेंस्ट एंड किल्स देम बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज. मतलब बॉडी क्या करती है, चलो ये वाला माइक्रोब है उसके साथ जम के फाइट करो और उसको ख़त्म करो. तो अगर एक बार वैक्सीन मतलब कि डेड और वीकेंड माइक्रोब्स को बॉडी में एंटर करने से वो फाइट करके एंटीबॉडीज पैदा करते हैं और वो उसको ख़त्म करते हैं, देन द एंटीबॉडी रिमेन्स इन द बॉडी. मतलब वो एंटीबॉडी है जो व्हेन द एंटीबॉडी इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस, और वो जब उसके साथ फाइट करते हैं माइक्रोब के साथ तो वो एंटीबॉडीज़ है वो बॉडी में ही रहते हैं, राइट? सो दिस इज़ द प्रोसेस दैट वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिसीज. मतलब कि अगर वो एंटीबॉडीज़ वहीं बॉडी में रहते हैं तो जब दूसरी बार वो वाला बैक्टीरिया फिर से आएगा तो क्या होगा, फिर से लड़ाई होगी एंड फिर से एंटीबॉडीज़ वो माइक्रोब्स और या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर देंगे. सो दिस इज़ द वे दैट वैक्सीन इज़ गोइंग टू वर्क एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स. Again, what happens?
when a disease carrying microbes or microorganisms enters, then the body produce antibodies. बॉडी क्या कर रही है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही है, और वो एंटीबॉडीज क्या करते हैं? फाइट. सो द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स. मतलब गिरने वाले हो तो फिर दूसरी बार याद रखोगे. वैसे ये वाले एंटीबॉडीज भी क्या करते हैं? बॉडी उसको याद रखती है कि अब इसके साथ कैसे फाइट की जाए. So what we have done, so if dead or weakened microbes are introduced in a healthy body, मतलब कि अगर बॉडी फाइट करना याद रख रही है तो जैसे डेड और वीकेंड माइक्रोब्स हैं उसको पहले ही बॉडी में एंटर कर दो तो वो क्या करेंगे? फाइट करेंगे, और उस फाइट के लिए वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? एंटीबॉडीज. और वो एंटीबॉडीज एक बार फाइट करने के बाद भी बॉडी में रहती है. इट रिमेन्स इन द बॉडी. सो दिस इज द वे दैट वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिसीज causing microbes, and this is how the vaccine is going to work. Okay, so vaccines, so we have discussed that how vaccines are going to work into your body. So now we are discussing that what is a vaccine. अगर आपने देखा कि वो कैसे वर्क करती है तो आपको आइडिया भी है कि वो क्या है, राइट? So vaccines are nothing but dead or weakened microorganisms that are introduced in the body. मतलब वैक्सीन क्या है? डेड और वीक माइक्रोऑर्गेनिजम्स है जो आपके बॉडी में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं. दैट इज कॉल्ड वैक्सीन्स. द वीकेंड माइक्रोऑर्गेनिजम्स डू नॉट हार्म द बॉडी. तो फिर आपको ये भी क्वेश्चन होगा कि अगर आपको ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स आप अगर एंटर कराते हो बॉडी में तो वो तो हार्म करेंगे. बट it is dead or it is weak microorganisms, so that's why it is not going to harm to your body. वो आपकी बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचाने वाले. नेक्स्ट थिंग इज दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज दैट फाइट अगेंस्ट डिसीजेस. मतलब ये क्या कर रहे हैं? दैट दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज दैट आर गोइंग टू फाइट द डिसीज एंड डेवलप्ड इम्यूनिटी. अब ये है कि इम्यूनिटी क्या है? So today whenever in this COVID-19 pandemic situation, everyone is talking about immunity, that develop the good immunity or boost your immunity. So the thing is that what is immunity? The ability of body to resist or fight a disease. मतलब आपके बॉडी की किसी भी डिसीज के साथ नेचुरली फाइट करने की जो क्वालिटी है, that is your immunity. So that is the reason that everyone is going to tell you that boost your immunity. Add such kind of food in your diet that they are going to boost your immunity. So take vitamin C, right, from lemonade or citrus fruits. ऐसी सारी चीज़ों से विटामिन सी जैसे बॉडी में जाता है, इट इज़ गोइंग टू बूस्ट योर इम्यूनिटी. सो नाउ वी आर क्लियर विद द इम्यूनिटी. सो दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज दैट फाइट अगेंस्ट डिसीज एंड डेवलप इम्यूनिटी. अब ये क्या कर रहे हैं? वैक्सीन बॉडी में जाके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है, एंड देन इट इज़ गोइंग टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज, एंड देन इट इज़ गोइंग टू डेवलप सर्टेन काइंड ऑफ इम्यूनिटी. दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड वैक्सीनेशन. ये सारी प्रोसेस क्या कहते हैं? इसको वैक्सीनेशन बोलते हैं. द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट और फाइट अ डिसीज इज नोन एज इम्यूनिटी. मतलब बॉडी की नेचुरली डिसीज के साथ फाइट करने की जो क्वालिटी है, दैट इज कॉल्ड अ इम्यूनिटी. Several diseases including cholera, TB, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination. So ये सारे जो डिसीज़ है वो वैक्सीनेशन से प्रिवेंट होते हैं. अब बात करते हैं और वैक्सीनेशन के बारे में. जैसे कि आपने देखा होगा ना, दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to a newborn child or a baby that they have given the certain kind of vaccination. Doctors giving you the proper list that you have to give this vaccination to this baby, right? So that is very important कि जब बॉर्न हो तभी से जब उनको थोड़े थोड़े टाइम पे वैक्सीनेशन देने से उनके बॉडी में वो इम्यूनिटी पैदा होती है, दे आर उनके बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू गो टू अ नियर बाय हॉस्पिटल एंड चेक दैट विच काइंड ऑफ वैक्सीनेशन you have given, right? Next thing is you have seen the advertisement in newspaper or the advertisement in TV. If you have listened the slogan again and again, दो बूंद जिंदगी की, so you know that you have the clear picture of Mr. Amitabh Bachchan and he is giving the advice to take the vaccination of polio, right? So government has introduced a polio program that give your child a proper vaccination of polio and save your child.
So this kind of programs are introduced by government for the awareness of the vaccination, right? So ये सारी चीज़ें government कर रही है, right? So it is very necessary, it is very important to get the vaccination done, right? So today the situation is also about the vaccination. We are also eagerly waiting for the vaccination of COVID-19 or novel coronavirus, that when the vaccination come, we are able to go to school, we are able to see you and you are able to learn from us, right? So we are hoping for the best that we get the vaccination soon, right? Okay, so the next thing we have to discuss, that is about the antibiotics. We have discussed all the things of antibiotics, certain except one thing, that antibiotics are also harmful. It is very good for you and it is very harmful for us also. It is very important that antibiotics, whichever antibiotics you are taking, that is prescribed from the good doctor, from the qualified doctor. And whenever the doctor is giving you the antibiotic, it is very important to finish the whole course of that antibiotic. When you don't need the antibiotics, please don't take the antibiotic unnecessarily, right? If you don't need the antibiotic, don't run to the chemist shop and tell them to give the antibiotics. No, that is not a good thing. Don't take the medicine or antibiotic if it is not prescribed by the doctor. Complete the full course, right? Because if you are taking unnecessarily the antibiotics, it is going to harm your body in the certain way that your body is not going to react इन द फ्यूचर. मतलब कि अगर पहले से इतनी एंटीबायोटिक ले रहे हो तो फ्यूचर में जब सच्ची में कोई डिसीज़ होगा ना, तो बॉडी उस एंटीबायोटिक से यूज टू हो जाएगी. वो एंटीबायोटिक्स आपके बॉडी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, राइट? सो योर बॉडी इज बिकमिंग यूज टू विद द एंटीबायोटिक्स. वो फ्रेंड हो जाएंगे, डिसीज़ भी फ्रेंड हो जाएगा एंटीबायोटिक्स का, राइट? सो डोंट टेक इट अननेसेसरीली, राइट? एंड द थिंग इज दैट high dosage of antibiotic, it is going to harm your body in the other way, that कि आपके बॉडी में जो नेचुरल बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, राइट, द गट बैक्टीरियाज, दे आर गोइंग टू हार्म देम. मतलब कि अननेसेसरी ये सारी चीज़ें एंटीबायोटिक लेने से वो आपके बॉडी के जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं ना, उनको भी अफेक्ट करते हैं और उनको भी ख़त्म कर देते हैं, राइट? सो इट इज़ good if you are taking antibiotics prescribed by the doctor, don't take it unnecessary, right? So today we have discussed about antibiotics and then we have discussed about the vaccination and vaccine.